Alright, hello, welcome back to another video. It's the 12th of Jan today, so a lot of you might be coming or might be making the decision to come to Australia and might be figuring out which state to go to, which city to go to, etc. etc. So without wasting too much time, let's get into today's video. I've been in Adelaide, Australia for 3 years now. So came here in January 2022. So yeah, literally completed 3 years in Adelaide, Australia a couple of weeks ago. And this is my review of Adelaide as a city for international students. But I thought, why not get other people's perspective and take as well. So I found another creator who has made a video on Adelaide. His name is VJ Vlogs, and this has gotten 36k views, as you can see. So let's go ahead and look at what he says, and then also give my take on what he says. So sort of a reaction video, but for Adelaide after 3 years. Let's go. के बारे में मतलब एडिलेड कैसी सिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है. ओके, दैट डजंट मीन्स कि यहाँ जॉब नहीं मिलती. Okay, so if you're someone who can't understand English, who can't understand Hindi, sorry, I'll sort of keep translating and explain what he says and give my take on it. So he starts off with the first thing he says is there are no opportunities in Adelaide, but still there are jobs. Honestly, I wouldn't start with that statement. I would still say that there are a lot of opportunities here in Adelaide. It just matters, or it just boils down to if you're doing the right things, if you're talking to the right people, and if you're making use of your time properly. So yeah, I mean, good start, but I'll try to pause less, but still keep you my perspective. यहाँ आपके पास एडवांटेज है ना, आपकी मनी सेविंग्स होगी. 100%. Cost of living is less, so you're saving more money. In comparison to Melbourne, Sydney, cost of living is less in Adelaide. Not when it comes to buying properties, that's cheaper in Melbourne, but generally on a day-to-day basis, you're saving money if you're living in Adelaide as a student and as a general civilian as well. वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉग. मैं आया हूँ सिटी, मॉर्निंग में होगी, मतलब काफ़ी अर्ली, एंड टुडे इट इज़ रेनिंग. मतलब सुबह सुबह देख सकते हो सिटी का माहौल एकदम सन्नाटा, कहीं कोई नहीं. ठीक है. I mean, that's the general lifestyle of Australia, right? If you come to the city on, from Monday to Friday in the morning, everybody is rushing to work. Everybody is going for the 9 to 5, 8 to 4. Tradies are already working on the side. So, the people who construct houses and stuff, they start at as early as 6 a.m., 7 a.m. So, yeah, you wouldn't see a lot of people. And especially if you're going to the city on a weekend morning, you 100% wouldn't see anybody because they're enjoying family time, they're enjoying their downtime that they don't generally get during the week. तो दिखाता हूँ, ये देखो सब कुछ बंद है. बारिश हुई है तो बाहर तो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगा. तुम देख सकते हो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है. ठीक है, यही अपना पूरा सैटरडे को अगर आप. A bit on the Adelaide weather. So right now, as you can, in January, it's hot. It's like hot. I'm sweating. So here summers are from November to, I would say, March, April. Then winter comes in. It's pretty cold in Adelaide, goes down to about 6-7 degrees. So if you're coming to Adelaide, get appropriate clothing with you. But again, a packing tip here would be, if you're coming in February, just pack for the weather ahead. So just pack for summers. Don't worry about winters too much because there are a lot of stores here where you can get cheap and affordable clothing. So yeah, that's a little bit about the Adelaide weather. पार्टी करोगे लेट तक तो संडे कहाँ से होगा? Okay, so he just said that it's Sunday. So yeah, 100%. If it's a family man or a woman, obviously, they will be enjoying some downtime with their family. If it's a teenager or anybody, they generally go hard. They party on Friday, Saturday nights. Like Adelaide is full of people people who are drinking, partying, etc. So yeah, you wouldn't see anybody on a Sunday morning, 100%. ठीक है, बाकी यही है. मैं आपको दिखाता हूँ. देखो कुछ डे मॉर्निंग हो गया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अगर मैं गया उधर तो. ठीक है, तो साइकिलिंग, जॉगिंग, अभी देखो एक बंदा जा रहा है साइकिल से, शायद आपको
अपने डॉग्स को लेकर के, पेट्स को लेकर। अभी तो थोड़ा रेनी है, इसीलिए वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ। Okay, another thing he talks about is fitness sport. Adelaide in general and Australia, there it's a very sporting friendly country, state, city, whatever you call it. Obviously, Australia country, Adelaide city, South Australia state. Very very sport friendly. So you will see a lot of run clubs, biking, cycling clubs, push bikes, obviously. Really really rich in sports. I play professional cricket, as you might know, or if you don't know, follow me on my Instagram at Anshul Sethi. But yeah, very very rich sporting culture here. हाँ जी, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा एडिलेड एज अ सिटी के बारे में। मतलब एडिलेड कैसी आगे का, जैसे क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। पढ़ाई के बाद एट द एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैटर हियर इज़ कि आपको जॉब कैसी मिलती है। बिकॉज जॉब ही ऐसी चीज़ है जो आप I just put it on 1.5x because I generally watch videos on 1.5x. But I think for my views, I'll put it on 1.25. So it helps. को आगे का पाथवे बनाएगी। मतलब अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, या कल को आप मान के चलो यहाँ पे। Again, for permanent residency, it is really important that you get a full-time job in your occupation. And obviously, if you're applying from Adelaide, you'll get extra 5 points. मतलब रहना चाहते हो परमानेंट जो भी है, या आपको पैसा कमाना है, तो एट द एंड कि आपको जॉब कैसी मिलती है वो मैटर करता है। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि एडिलेड एज अ सिटी मतलब रहने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कैसी है। ठीक है, तो वैसे देखो, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑनेस्टली बताऊंगा जो सच्चाई है। ठीक है, तो भाई देखो, एडिलेड एज अ सिटी की बात करें ना, इट इज़ स्मॉलर दैन मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन। हाँ जी, तो गाइस मैं बता रहा था आपको कि देखो, सिटी इज़ स्मॉलर। ठीक है, दैट डजेंट मीन्स कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ओके, दैट डजेंट मीन्स कि यहाँ जॉब नहीं मिलती, दैट डजेंट मीन्स कि यहाँ पे इसके अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, सिटी स्मॉलर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, सिडनी, बट सिटी आपकी बहुत अच्छी है। लिटरली बताऊँ, सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रहने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे शायद एक इंडेक्स आया था मोस्ट लिवेबल सिटीज़, तो उसमें वाइट में नंबर 3 था। 100%. I have talked to so many Aussies who, are born and brought up in Adelaide, go to Melbourne and Sydney, for a job, for work, but they end up coming back to Adelaide to buy properties or to, live. So Adelaide is a very livable city. Like, there's work-life balance, commute is shorter, good money, good business opportunities, good general like job opportunities as well. So yeah, very good and livable city. देखो मोटर बाइक, मतलब यहाँ बाइक स्क्रीन में ऐसे घुमा रही है, तो वही साउंड आ रहा था। तो देखो, सिटी की बात करें, सिटी मच बेटर, सिटी काफ़ी अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट इट इज़ वे मच बेटर मेलबर्न, सिडनी की भाग दौड़ से। ठीक है, Again, really depends on where you invest your time and who you're talking to. और एडिलेड में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कल को आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 20-30 मिनट, 1 घंटे में सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाओगे। मेलबर्न, सिडनी में 100%. The amount of time you save on commute in Adelaide is mind-boggling. I've been to Melbourne 7 times now. Oh my god, from one place to another, easily 30 minutes, 45 minutes, an hour. So the amount you're spending on petrol, the amount of time you're spending, and the other tasks that you're letting go of, which you can do in the time that you save. 1 घंटे में तो कुछ होता ही नहीं, 1 घंटे में तो आप कहाँ पहुँचोगे, मतलब 1 घंटे में तो कुछ। A case like this will ruin your iPhone 16, and here's why. Apple's iPhone जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे ये है कि आप आधे घंटे 20-25 मिनट, दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी अब देखो, स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है, तो पढ़ाई की अगर बात करें तो एडिलेड में यूनिवर्सिटी गाइडेड बहुत अच्छी अच्छी जो मेरी यूनिवर्सिटी एडिलेड में GATE में आती है, यूनिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, और ऐसी कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पढ़ाई की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ आर क्वाइट गुड। ठीक है, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई बच्चा जॉब करना चाहता है तो जॉब के लिए क्या स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ढूंढने में, बट इफ़ यू सर्च बाय हार्ट का मतलब कि अगर आप ढंग से जॉब ढूंढते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों की बात करनी पड़ेगी, जॉब ढूंढने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। For the people who are coming in, February intake is the biggest intake. So when a lot of students are coming in together, imagine that those jobs that are live or that are vacant, a lot of people will be applying for that. So
he's correct. He like it's the truth. In the start, it'll be a bit of a struggle, but again, really depends on whom you're talking to, where you're spending your time, where you're investing your time. So that will really make a lot of difference. So that is one from my end. One tip for you: talk to the right people. Talk to people who've been here for longer than you have. And I think you'll see a great difference in the timeline of you getting a job and maybe your batchmates or somebody else getting a job. और अगर आपको किसी अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ की नॉलेज है, तो आपको जॉब ईजी होता है मिलना एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स, बिकॉज आप ऐसे ईजिली फिफ्टी काम का मतलब एक्सपीरियंस है। अगर नहीं एक्सपीरियंस तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जॉब मिल जाएगा। ठीक है, जॉब की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट है जॉब मिलना एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीखने में, डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। ठीक है, और जॉब के बाद अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग जो है ना यहाँ पे थोड़ा लेस है एज कम्पेयर टू दो सिटीज़। ठीक है, बट अर्निंग अगर लेस है तो खर्चे की बात करें, खर्चे उसी रेंज में है बट थोड़ा चीप है वहाँ से। अब चीप की बात करें तो सबसे मेन तो यही है कि यहाँ पे आपका I wouldn't say that earnings are less here. It's just that there are more different types of opportunities in Melbourne and Sydney. So you can open yourself up to those sort of opportunities, which will end up getting you a high pay. But if I talk about a barista getting paid in Adelaide and a barista getting paid in Melbourne, it'll be the same. If I talk about a McDonald's employee getting paid in Adelaide and getting paid in Melbourne or Sydney, it'll be the same. So it's just the types of opportunities that you may open yourself up to. That's what I would say from my perspective. Pay is the same. एडिलेड में क्या है, अगर आपको अनलिमिटेड ट्रैवलिंग यूज़ करनी है सिटी में, यहाँ पे एडिलेड मेट्रो के अंदर सारी बस ट्रेन आती है। $54 का आपका होता है, $53.5 का स्टूडेंट्स का, और अनलिमिटेड ट्रैवलिंग होती है। मेलबर्न में शायद $80 या $90 है, तो यहाँ आपके पास एडवांटेज है ना आपकी मनी। 100%. Public transport is way cheaper in Adelaide. In Melbourne, it's I think $4.5 or $4.80 per tap. In Adelaide, for a student, it can be as less as 2.15, if I'm not wrong. So public transport is way cheaper in Adelaide, and as he said, you can just buy a 28-day pass for like $53 to $57. It's in that range, which allows you to travel indefinite amount of times for 28 days. So you tap anywhere, wherever you want to. You can travel via public transport anywhere. तो मिला जुला करके देखो तो बात फिर वही है कि आपका एक्सपेंसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आप सिटी के करीब रह सकते हो, कभी भी सिटी में कुछ काम है तुरंत जा सकते हो, जाने में ईजी होता है बहुत। ट्रैवलिंग का टाइम बस बहुत ज़्यादा है, तो टाइम इज़ मनी। ठीक है, क्योंकि पे रेट पर आवर होता है, तो आपका अगर 1 घंटा भी ट्रैवलिंग में ख़राब होता है तो यू आर लूजिंग दैट मनी। ये एडवांटेज है। अगले एडवांटेज की बात करूँ, मतलब ये हो गया आपका जॉब और अर्निंग का। बाकी जॉब के टाइम मतलब ये है कि आपका पढ़ाई के टाइम पे तो थोड़ा, अगर आपकी फ़ीस कम है देन यू विल बी एबल टू, मतलब आप सारी फीस निकाल सकते हैं। Again, with 24 hours a week, very hard for people to earn their own fees and pay, especially for the public universities. So I would just say do your own calculations according to what your pay rate is and what your fees is, because if you're earning 24 hours, like if you're only working 24 hours a week and earning, let's say high end would be $32, not even 32 actually, $28 an hour, and then out of those 24 hours, if you do some hours on the weekend where you get a higher pay, you're only earning $600-700 a week. So do your calculation accordingly. अभी क्या है कि वर्किंग राइट्स रेस्ट्रिक्शंस लगने वाले 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से इन स्टार्टिंग इट इज़ डिफिकल्ट। इन स्टार्टिंग आप ऑल गुड ओके। तो जॉब की बात हो गई, स्टडीज़ की बात हो गई, नहीं रहते इन पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग इतने लोग आ रहे हैं कि मतलब समझ लो प्रॉब्लम होती है सर्च करने में, बट आपको मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा रेंट ज़्यादा लगे कम लगे, कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाता है रहने में। ठीक है, तो अकोमोडेशन में भी आपका हो जाएगा। बाकी मैंने आपको एक्सपेंसेस का बता ही दिया, फीस। Accommodation is same everywhere, man. Yeah, just if you want to go for student accommodation, your first 6-12 months will be easier. That I've said in multiple of my videos. My choice would be Scape because I lived there. I had such a great experience. Other than that, if you want to find private rentals, you can take a little bit of a risk. Come to Adelaide and start going for inspections. But yeah, just see what your comfort level is and what your budget is.
इसका बता दिया, ठीक है। और मैंने और लाइफ की बात करूँ तो भाई लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। मतलब लाइफ इज मतलब एकदम आराम सी सिटी है, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी वैसी सिटी है ना, भाग दौड़ है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के बाद जॉब, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Like what I've heard is, some people say if you make it in Delhi or Mumbai, you can make it anywhere. Same for if you make it in New York, you can make it anywhere. I would say Adelaide is not like that. Adelaide is a more chill, calm city where you can, grow your roots and actually, make that sort of a community, get accustomed to Australia. And then if you want, look at moving. But yeah, as a city, great. अगर आप कोई वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हो आपको जॉब इजीली मिल जाएंगी। अगर आप आईटी में कर रहे हो एंड आईटी में भी जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। आईटी फील्ड में भी जॉब्स हैं। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो उसमें भी जॉब है, क्योंकि नॉलेज तो देखो हर जगह चाहिए यार। बिना नॉलेज के कोई क्यों नहीं हायर करेगा, किसे हायर करोगे? जो पर्सन हुए द नॉलेज, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो भाई पीछे देखो फोटो शूट चल रहा है, तो पीछे फोटो शूट चल रहा है। तो परमानेंट रेजिडेंसी में एडिलेड में आपको स्टडीज़ के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जॉब करने के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। अगर आप एडिलेड में हो तो आपको पीआर में 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। I really don't know about that. Probably best would be to reach out to a migration agent for that. I don't know if you get 10. I think it's 5. एडिलेड में जो इनविटेशन कॉम्पिटिशन इज देयर, गवर्नमेंट का फिक्स है कि न्यू साउथ वेल्स में विक्टोरिया में हम इतने लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। बिकॉज इनको हर चीज़ में अपना ऐसे बड़ी ना, अगर आप पर्थ, क्योंकि देखो जो आदमी Okay, I think after this he starts talking about, migration and all that, and I don't want to get into it because let's leave that to the experts. But yeah, as a city, Adelaide, already gave you my perspective. I think it has set me up for success. I finished studying here. I'm now working full time here. Will be applying for my PR soon, etc. So it really has added a lot of value to me, and it's a really great city for me. A really livable city per se. Me being a 22-year-old, I think I'm setting myself up for success. But if you're confused in between which state to choose, and if you have any questions about Adelaide, Melbourne, or whatever, feel free to put it down in the comments or reach out to me on my Instagram at Anshul Sethi, and I'll be happy to help you out. And even if you're coming to Adelaide in February 2025 or July 2025, just reach out and let's have a chat. Let's grab a coffee, so that I can, if you need any help, I can help you out. All right, lovely. Please like, share, and subscribe, and I'll see you in the next one. See ya.